Why should I study history? How is history useful? क्या काम आएगा history? History क्यों पढ़ना चाहिए? Sounds like your questions, right? I know you have these questions about history, right? So let us understand what is applied history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the present and future times. Applied history is the field of study, right? History जो है कोई भी subject, it's a field of study, right? हम उसे पढ़ते हैं. So it's a field of study concerned with the application of history. Applied application, right? Applied, apply करना, right? Apply किया. So application of history. किसके लिए? For the benefit of people in the past? No, for the benefit of the people in the present and future times, right? So जो history है, applied history है, वो किसके बारे में है? It's a field of study. एक पढ़ाई का एक branch है. It's a field of study concerned with the application of history. Applied history, application of history. Why? For the benefit. उसमें से फायदा होना चाहिए. किसे? जो लोग अभी है और जो फ्यूचर में होंगे, right? Not the people in the past, because they've already gone. The history has happened at that time. So we have to use history for the benefit of the people who are present now and for the people in the future, right? So अगर आप definition का ऐसा breakdown कर लोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा. You can repeat with me. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the present and future times. Easy, yeah? Okay. So making history meaningful and helpful, but कैसा? हम बोल रहे उसको meaningful बनाना, उसको helpful बनाना, but कैसे बनाएंगे उसको? So, first thing, knowledge of history can help find solutions to contemporary social issues. Okay, हिस्ट्री में से हमें जो नॉलेज मिलता है, राइट, उसमें काफ़ी सारे इवेंट्स हो चुके हैं, उस इवेंट्स का रिएक्शन क्या था, उसका आउटकम क्या था, उसकी वजह से क्या हुआ, ये सब जान के हम आज के ज़माने में, आज के कॉन्टेम्पररी इश्यूज, कॉन्टेम्पररी यानी करंट टाइम में, जो करंट टाइम में हमारी सोसाइटी में जो इश्यूज है उसका सल्यूशन वहां से ढूंढ सकते हैं. कैसा? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल सो इट्स इजी टू रिमेम्बर. इन द पास्ट हम लोग लास्ट चैप्टर में कास्ट सिस्टम के बारे में काफ़ी पढ़े थे, राइट? जो कास्ट सिस्टम था उसकी वजह से क्या हो रहा था, सोसाइटी में डिविजन हो गए थे, सो देयर वाज अ स्ट्रगल विच वॉज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, राइट? सो वो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ से हमें समझ में आता है कि आज हमारी सोसाइटी में अगर डिविजन की प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट कास्ट रिलेटेड, कोई भी डिविजन है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. सो हमें कोई भी डिविजन क्रिएट नहीं करना है, right? So finding solutions to contemporary social issues, जो करंट टाइम में हमारी सोशल इश्यूज जो है उसका सल्यूशन हमें वहां से मिलता है, एंड वी कैन इंक्लूड देम इन दी सोशल प्लानिंग. या ठीक है? और क्या हो सकता है? Many projects and programs related to applied history are run. आज के ज़माने में पास्ट के जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी जो चीज़ें थी उसके प्रोजेक्ट्स अभी रन करने में आते हैं. सो हाउ डज दैट हेल्प? They not only create opportunities for experts but also for normal people like you and me to participate. जब ये प्रोजेक्ट्स रन करने में आते हैं तो प्रोजेक्ट्स ऐसे ही रन नहीं हो जाते, उसके लिए तो सबसे पहले आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, और हम इन एक्सपर्ट्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट? हु आर दिस एक्सपर्ट्स? They have the knowledge, they have the language skills, they have various skills that helps to authenticate the documents, it helps to authenticate the monuments. ये जो भी है उनके पास काफ़ी knowledge है, they are the experts, okay? उन्होंने वो फील्ड में काफ़ी स्टडी की है. So experts के लिए job opportunities है, right? So there are economic benefits that we have because of the applied history. And also it creates opportunities for people like us. तुम, मैं, बाकी सब लोग जो experts नहीं है वो भी participate कर सकते हैं. For instance, as a tourist, right? हम जो historical monuments देखने जाते हैं, caves देखने जाते हैं, forts देखने जाते हैं, buildings देखने जाते हैं. So
we also participate but not as experts but as tourists. और जब हम उसमें participate करते हैं हमें और भी knowledge मिलता है, right? So as tourists we visit many historical sites or museums and our knowledge and interest in history is promoted, right? जब हम कोई भी historical monuments के बारे में पढ़ते हैं वर्सेस उसको जाके देखते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ताजमहल पे एक बड़ा चैप्टर हो ताजमहल ये है ताजमहल में वो है यू वोंट फाइंड इट दैट इंटरेस्टिंग मे बी ओके बट जब आप ताजमहल को जाके देखोगे तो ये सारी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आएंगी याद भी रहेंगी और आपको और भी इंटरेस्ट उसके अंदर आएगा बिकॉज यू आर सीइंग दैट प्लेस यू आर फीलिंग दैट प्लेस ओके आप उसको बारीकी से देख रहे हो यू आर प्रेजेंट इन दैट प्लेस सो एज टूरिस्ट we visit many historical sites or museums and our knowledge and interest in history is promoted. Okay? Also, we can volunteer to participate in the conservation and preservation of various projects that are run in our city, in our village, in our district, in our vicinity, right? So बहुत सारे historical monuments का restoration हो रहा है उनका preservation हो रहा है तो सारे projects में बहुत सारी opportunities होती है not necessarily as an expert but बहुत सारी दूसरी भी opportunities होती है तो आप उसमें भी participate कर सकते हो okay thereby आप ये renovation में preservation में आप contribute भी करते हो और आपका knowledge भी बढ़ता है. यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप ये सारी प्लेसेस विजिट करते हो चाहे वो फोर्ट्स हो या बिल्डिंग्स हो या केव्स हो या जो भी है ये हमारी जो मॉन्यूमेंट्स है ये जो हमारी बिल्डिंग्स है ये सारा हमारा इतिहास जो है हमारा हिस्ट्री है वी हैव टू टेक प्राइड इन देम और ये सारी चीज़ों पे जब जाते हो प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट राइट एनीथिंग ओवर देयर ऐसा करके हम वो प्लेस की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों को भी वो अच्छा नहीं लगता है और जब टूरिस्ट आते हैं बाहर से स्पेशली फॉरेनर्स दे सी दिस थिंग्स राइट सो वी आर गिविंग अ वेरी बैड impression to them. So visit these places, enjoy these places, but avoid spoiling them, avoid writing anything over there. Take care of these places as if you would take care of your house. Okay? Last point here. Applied history is also known as public history. It's for everybody, right? So it is also known as public history. Hey, I was so excited to talk about applied history that I forgot to welcome you and give basic introduction to the chapter. I'm sorry. कोई गल नहीं, अब कर लेते हैं, right? So welcome to this third chapter titled Applied History from your favorite history book, and it is Happy History. As you can see, this chapter has only 5 subsections. What is applied history? Applied history and research in various fields. Applied history and our present. Management of cultural and natural heritage. Affiliated professional fields. Only 5 subsections. So the first section is what is applied history, and we have already done that. What is applied history हमारा हो चुका है, so we are only left with 4 more sections. So we move to the second section, applied history and research in various fields. Are you ready? Yes, let's go. Do you think there could be any connection between history and various other fields like science, philosophy, politics, mathematics, etc.? क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स है जैसे कि साइंस फिलोसफी मैथ्स एटसेट्रा एटसेट्रा इनके अंदर कोई कनेक्शन हो सकता है लाइक हिस्ट्री एंड द सब्जेक्ट्स डू यू थिंक दे आर कनेक्टेड लाइक हिस्ट्री एंड फिलोसफी कनेक्टेड हिस्ट्री एंड साइंस कनेक्टेड हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कनेक्टेड एंड लाइकवाइज क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है yes you're thinking maybe well there is okay every field, yes, every field has history. Whatever field it is, be it mathematics, philosophy, science, कोई भी field आप बोलो, हर एक field में history है. Every field has history.
Each and every field has its own history of building knowledge. Okay, so let us understand how it works, how this history connected with every subject works. Okay, so what has happened so far, यानी अभी तक क्या हुआ है, some knowledge is available, right? So what has happened so far, or based on the available knowledge, a sense of direction of future development is provided. अभी तक कोई भी फील्ड में क्या हुआ है, अभी क्या नॉलेज है हमारे पास, उसके बेसिस पे आगे हमको क्या करना है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, राइट? सो आज जैसे कि एक ज़माना था जब नंबर्स थे, तो नंबर्स हमें मालूम है तो हम वो नंबर से आगे क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अभी वो हमें मालूम है, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। सो वैसे ये फील्ड्स डेवलप होते हैं। तो एक ज़माने में कंप्यूटर नहीं थे, राइट? सो वो कंप्यूटर्स बने, बड़े कंप्यूटर्स थे, अभी वो हमें मालूम है, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, उसमें से हमें समझ में आया। सो वट एवर नॉलेज इज अवेलेबल, जो अभी तक हुआ है, उसके बेसिस पे हम आगे क्या करना है वो सोच सकते हैं। सो इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर future development. So remember that nobody starts from zero each time, right? जब कोई आज का इन्वेंशन होता है कंप्यूटर्स के फील्ड में फॉर एग्जांपल, सो दैट पर्सन डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीट स्क्रैच, एकदम जीरो से शुरुआत नहीं होती, जो अभी अवेलेबल है उस पे से शुरू कंटिन्यूएशन होता है, राइट? सो nobody starts from zero each time. Thus history is important in एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में हिस्ट्री है और हिस्ट्री हर एक फील्ड में इम्पॉर्टेंट है। रिमेंबर, even our present lifestyle is shaped by the historical events, by the chain of historical events. Okay, जो पास्ट में जो भी हो चुका है, आज हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम जैसा जी रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल और आपके पेरेंट्स की लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होगा, राइट? अभी उनकी भी चेंज हो रही है, उनका बचपन आपका बचपन बहुत डिफरेंट है। सो इवन आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल, हम जिस तरह से जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, इज शेप्ड बाय द chain of historical events. So let's see the role of history in various fields. Now हमने बोला कि history is present in all the fields, right? So let's see how history is present in some of these fields. First, let's see history in philosophy. For instance, India is a democratic republic. हम बोलते हैं, right? India is a democratic republic country. But क्या हमेशा से इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री था? नहीं, it was not the case always, right? It's a recent, like few years, few decades ago, ये phenomena, ये ideology develop हुई थी. Forever that was not the case, right? So what is the origin of this ideology? ये जो ideology है कि India is a democratic republic country, उसकी origin कहाँ से हुई? How was it, how did it develop historically, and what intellectual traditions were involved in making this ideology? ये जो आइडियोलॉजी है वो हिस्टोरिकली कैसा डेवलप हुई, क्या हुआ था जिसकी वजह से ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई? ओके, एंड व्हाट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, इसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, राइट? इंटेलेक्ट की बात हो रही है, तो दिमाग की बात हो रही है, जो थॉट प्रोसेस है, सोच क्या थी उसके पीछे, वो हम यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। सो हाउ डिड इट डेवलप हिस्टोरिकली, कैसा ये हिस्ट्री में डेवलप हुआ, एंड व्हाट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस वर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ दिस आइडियोलॉजी, इस आइडियोलॉजी को बनाने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, क्या विचारधाराएं थी, वो हम यहाँ पे फिलोसॉफी में समझते हैं, राइट? सो व्हाट आर वी डूइंग? We are getting into the history. So to know this, one needs to know the history of philosophy, right? तो history आ गया यहाँ पे. Thus, the history of philosophy helps in understanding the origin of various ideologies. ये जो बहुत सारी है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, राइट? कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, ऐसे बहुत सारी आइडियोलॉजीज है दुनिया में। तो ये सारी आइडियोलॉजीज कहाँ से आई, उनका ओरिजिन क्या है, वो समझने में हमें हेल्प करता है. व्हाट हेल्प्स? द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, जो थॉट प्रोसेस है, जो उसके अंदर हमारी विचारधाराएं है, वो क्या है, right? So the intellectual traditions giving rise to those ideologies and their historical
डेवलपमेंट, वो कैसा हिस्टोरिकली डेवलप हुई, राइट। सो बहुत सारे जो आइडियोलॉजीज होते हैं सब वन गो में नहीं बन जाते, वो कुछ होता है फिर उसमें इवोल्यूशन होता है, उसमें चेंजेस आता है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बोल रहे हैं हम लोग। सो ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कहाँ से शुरुआत हुई, ओरिजिन, उसके अंदर क्या थॉट प्रोसेस गया, और वो हिस्टोरिकली कैसा डेवलप हुई है, राइट। ओरिजिन अभी नहीं हुआ, पास्ट में हुआ था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हो, ओरिजिन, थॉट प्रोसेस क्या था, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, और ओरिजिन के बाद उसका प्रोसेस क्या था, कैसे डेवलप हुआ है, वी टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, सो हिस्टोरिकल development. So history of philosophy helps us in understanding the origin of various ideologies, the intellectual traditions giving rise to those ideologies, and their historical development. Okay? And of course, it needs a language as a medium of expression. Language की ज़रूरत है, right? Language नहीं है तो हम कैसे समझते उसको? So language is essential as a medium of expression. It means what? It means that one also requires knowledge of the history of language to understand the philosophical expression. तो यानी जो philosophical चीज़ें हम यहाँ पे बोल रहे हैं, history of philosophy helps us to understand various ideologies, right? तो वो समझने के लिए हमें एक language भी चाहिए. So language की जो history है, क्योंकि language also keeps evolving, right? आज हम जिस तरह से बोलते हैं, there are many new words that we didn't use before. So it happens, it just comes, right, with the time, with experience. हम कहीं पे कुछ सुनते हैं, फिर we start using, and then everybody starts using. Example, Google. आज Google, the way we are using it's like verb, right? Google कर लेना, right? So this is how the language develops, right? So history of language is also important to understand this philosophical expression. Was it easy? Yes, it is, right? So now we move on to the next subject. And the next subject is science. What does science have? Science के अंदर क्या होता है? हम क्या पढ़ते हैं science के अंदर? We study about discoveries, inventions and theories, right? कैसे क्या discovery हुई थी, क्या inventions हुए थे, क्या theories थी, right? So science is about discoveries, inventions and theories. Thus, the history of science helps in understanding the chronological order, cause and effect chain, and factors of this scientific discoveries, inventions and theories. Okay? तो हम जब ये साइंस में जो भी चीज़ें होती है उसकी जो हिस्ट्री है, साइंस की जो हिस्ट्री है, it helps us understand the chronological order. Same हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, right? Why historical research? To get the chronological order, right? तो साइंस में भी chronology है, right? पहले बड़े कंप्यूटर्स बने, उसके बाद छोटे आए, उसके बाद छोटे आए, and today we have like the laptops, right? Even the notebooks we have, so they are getting smaller and smaller and more efficient. तो जो chronological order है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, so that is the history of science. Then also history of science helps us understand the cause and effect. क्या हुआ जिसकी वजह से ये हुआ. So cause and effect relationship. All this we have studied already in chapter 1, but in relation to history. Same चीज़ है यहाँ पे, okay? History का जो था वही है, खाली हम यहाँ पे बोल रहे हैं history of science helps us, right? वो history था, but यहाँ पे हम history of science is a particular बोल रहे हैं. So बाकी कुछ ऐसा खास फर्क नहीं है, तो आप first chapter से भी यहाँ पे लिख सकते हो, right? So chronological order, cause and effect, और ये factors. क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुई, थियरीज आई, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन ने देखा बल गिरा, वो सीधा नीचे गिरा, यहाँ वहाँ क्यों नहीं गिरा? सो दैट लेड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? सो हाउ दिस डिफरेंट इवेंट्स जो है, जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से सारे जो डिस्कवरीज हुई या इन्वेंशंस हुई या ये थियरीज बाहर आई. ओके, so this is the history of science, helps us understand the chronological order, cause and effect chain, and factors of scientific discoveries, inventions and theories. Okay, so now human efforts to fulfill a need and also the curiosity makes all these inventions, discoveries and theories possible, right? ये कैसे होता है? जो इंसान जो है उसके जो efforts है
टू फुलफिल अ नीड, उनकी कोई नीड है उसको फुलफिल करना। जैसे कि अभी हमारे पास पहले बड़े कंप्यूटर्स थे, अभी नीड क्या थे कि हमारे छोटे कंप्यूटर्स होने चाहिए ताकि हम कम जगह लें, और छोटे होने चाहिए ताकि वो और कम जगह ले और एफिशिएंट, और अभी हम वो कंप्यूटर्स हमारे साथ कैरी कर सकने चाहिए। सो लैपटॉप, सो नीड, राइट? सो ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड, हम जो एफर्ट्स करते हैं हमारी जो नीड्स है उसको फुलफिल करने में, हमारी नीड्स की, हमारी ज़रूरत को पूरी करने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं वो। और क्यूरियोसिटी, ऑलवेज बी क्यूरियस इन लाइफ, क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब बच्चे होते हैं ना बहुत क्यूरियस होते हैं, हर एक चीज़ में जानने की कोशिश करते हैं, बट एज वी ग्रो आवर क्यूरियोसिटी reduces फॉर सम रीज़न। बट बी ऑलवेज क्यूरियस, लाइफ में हमेशा क्यूरियोसिटी बनाए रखना। जो लोग क्यूरियस रहते हैं वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। सो हमेशा क्यूरियस रहना, ओके, टू नो मोर एंड मोर हाउ थिंग्स वर्क, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। try, and because that will help you gain more knowledge, और जब आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, राइट? सो ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल अ नीड एंड ऑल्सो द क्यूरियोसिटी, राइट? ये क्यूरियोसिटी नहीं होती, ये इन्वेंशन ये डिस्कवरीज नहीं होती, तो क्यूरियोसिटी के साथ साथ एफर्ट्स लगाना भी ज़रूरी है। एफर्ट्स लगाने को हम तैयार है बट क्यूरियस नहीं है तो नहीं चलेगा, क्यूरियस है बट एफर्ट्स नहीं लगा रहे तो नहीं चलेगा। क्यूरियस है, हमने बहुत सारा नॉलेज एक्वायर कर लिया बट उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा, राइट? तो एफर्ट्स करने को हम तैयार है, मेहनत करेंगे, बट हमको कुछ जानना नहीं तो मेहनत कहाँ करोगे, राइट? सो जनरली आपकी लाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ, एफर्ट्स एंड क्यूरियोसिटी गो हैंड इन हैंड, ओके? सो ऑलवेज बी रेडी टू पुट इन एफर्ट्स, मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहना, एंड ऑलवेज बी क्यूरियस, ओके? So these efforts are based on already available scientific knowledge, right? तो जो knowledge हम ये जो efforts है कहाँ लगा रहे हैं, तो ऑलरेडी एफर्ट्स जो है ऐसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। एज वी सेड बिफोर, कोई भी चीज़ हम स्क्रैच से नहीं करते, ज़ीरो से नहीं करते हैं। तो जो ऑलरेडी साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, जो साइंटिफिक नॉलेज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उस पर हम और एफर्ट्स लगा के और फिर नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस और थियोरीज हम बनाते जाते हैं, ओके? सो दिस वाज साइंस एंड हिस्ट्री। व्हेन आई से टेक्नोलॉजी, जब मैं बोलती टेक्नोलॉजी तो आपके दिमाग में क्या आता है? यूजुअली कंप्यूटर्स, इंटरनेट, वाईफाई, टेलीफोन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट? सो रिमेंबर, technology is not only that, technology is much beyond that, okay? So technology सिर्फ computers, internet यही नहीं है, technology is also about agricultural production, it is about commodity production, it is about architecture, it is about engineering and many more things. So technology is much beyond computers, okay? Agricultural production है, commodity production है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, ये सारा टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। Thus, the history of technology helps in understanding the changes and their causes in various fields as mentioned before. Okay? तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके कॉजेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से पता चलती है? हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? हर एक चीज़ सब्जेक्ट का हिस्ट्री हमने देख लिया है, राइट? सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी हिस्ट्री है जो हमें समझने में हेल्प करता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर और उसके कॉजेस क्या है, किस वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, ओके? So do you think there is any relation between science and technology? आपको क्या लगता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? Is there a relationship between science and technology? Well, sounds like a silly question, right? Well, true. Scientific discoveries and inventions and technological advancement are mutually dependent on each other. ओके, साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हम बोलते हैं वो, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, म्यूचुअली, राइट? दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से साइंटिफिक डेवलपमेंट्स भी होते हैं, राइट? सो दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, एक दूसरे पे वो
डिपेंड करते हैं. Okay, so both knowledge are important right from the beginning. मीनिंग शुरुआत से बात करते हैं, अगर जो स्टोन टूल्स थे, राइट, पत्थर से क्या होता था, उन लोग आग जनरेट करते थे, प्रोटेक्शन में यूज करते थे, वहां से लेके आज तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स बोलो या टेक्नोलॉजी में, ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन बिटवीन साइंस एंड द technology. Okay, so thus the history of technology helps us to know this mutual dependency. टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स है उसकी वजह से हमें ये दोनों के बीच में, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिपेंडेंसी है, जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी हम बोल रहे हैं, वो किस तरह से है, वो समझने में और द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म को समझने में भी हेल्प करता है. ओके, सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से we understand two things. It helps us to know the mutual dependency and also the development of mechanism. वो mechanism का किस तरह से development हुआ, right? और ये दोनों के बीच में क्या dependency है. So this is how history is present even in technology. Okay, so let's move on to the next subject. Here we are with the next subject, industry and commerce. Industry and commerce. So what happens with the growth of industry and trade? जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, ट्रेड बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है? ऑफ कोर्स पैसे आते हैं, वो एक चीज़ है, राइट, पर उसके अलावा क्या होता है? The mutual social transactions also expands, and it also promotes continuous development of the network of cultural interactions. Okay, जब इंडस्ट्री और कॉमर्स बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, तो सोशल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं. जो सोसाइटी है वो एक दूसरे की देखती है, उसमें से एक दूसरे से सीखते हैं. वो जो सोशल ट्रांजैक्शन है, यानी एक सोसाइटी का इन्फ्लुएंस दूसरी सोसाइटी पे होना, वो भी वहाँ पे होता है, राइट. पीपल आर मीटिंग, दे आर टॉकिंग, दे आर डिस्कसिंग, सो एक दूसरे के थॉट्स शेयरिंग होती है, राइट. सो सोशल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं और कल्चरल इंटरेक्शंस भी होते हैं, राइट. हम जब दूसरे कल्चर में जाते हैं तो वहाँ का जो कल्चर है उसमें से कुछ देख के आते हैं, वहाँ से कुछ एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, राइट. जब हम देखते हैं कि कोई बाहर जाके आता है थोड़े साल के बाद, अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी रह के आता है, वो इंसान थोड़ा बदल के आता है, क्योंकि उसने वहाँ का कल्चर में रहा है, वहाँ के कल्चर को थोड़ा अडॉप्ट किया है, राइट. सो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जब बिजनेस बढ़ता है तो वो ट्रांजैक्शंस भी बढ़ते हैं. ओके, सो व्हाट ट्रांजैक्शंस आर वी टॉकिंग? सोशल ट्रांजैक्शंस एंड कल्चरल इंटरेक्शंस. ओके, बिजनेस है तो ऑफ कोर्स पैसा तो है, बट यहाँ पे हम इसका इम्पैक्ट क्या है, हिस्ट्री के रिलेटेड हमें पढ़ना है, राइट. सो वी से दैट व्हेन इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स एक्सपांड्स, जब आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है, आपका बिजनेस बढ़ता है, तो सोशल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं और कल्चरल इंटरेक्शंस भी होते हैं. We know that market and commerce never remains the same, right? Market जो है, business जो है, वो हमेशा सेम नहीं रहता है, right? It keeps changing continuously. उसमें कोई ना कोई बदलाव आते रहते हैं because of many reasons, right? Therefore, human relationships and social organizations change too, राइट. अगर बिजनेस में चेंजेस आ रहा है, एंड दैट इज बाउंड टू हैपन, हमेशा सेम बिजनेस सेम तरीके से नहीं चलता है, उसमें चेंजेस आते हैं, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है, और ह्यूमन की जब हम बात करते हैं, सो वी आर सोशल एनिमल, राइट. सो ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड social organizations also change. Okay, so thus to understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organization and economic institutions. ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको समझने के लिए क्या चेंजेस है, आज इंडिया जिस तरह से है, हाउ वाज इंडिया 10 years ago, हाउ वाज इंडिया 20 years ago, हाउ इज इट नाउ, ये सारा समझने के लिए you need to understand the history of culture, right, history of social organization and also the economic institutions. आज हमको अगर इंडिया को समझना है, इंडिया was very different few years ago. So this changes that we have, how it has evolved, how it has happened, क्यों आए, कहाँ से आए, ये सारा समझने के लिए you need to study the
history of culture, history of social organizations, and economic institutions, right? So anything that you want to understand in present, कोई भी फील्ड में आप कुछ भी आज की तारीख में जो हो रहा है उसे समझना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री में जाना ही पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शन, राइट? हिस्ट्री सम देखोगे तो आपको समझ में आएगी कहाँ से सारे बदलाव आ रहे हैं. हमने बोला आइडियोलॉजीज, राइट? सो ये बदलाव कहाँ से आ रहे हैं, चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं. सो हिस्ट्री इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड इट. तो चाहे हमें हिस्ट्री अच्छी लगे या ना लगे, हिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा. और कोई भी फील्ड में हिस्ट्री है. आप जब 10th के बाद साइंस लोगे तो साइंस में भी हिस्ट्री होएगी, कॉमर्स में भी हिस्ट्री होएगी, आर्ट्स में भी हिस्ट्री होएगी. सो हिस्ट्री इज एवरीवेयर. आपकी खुद की अपनी हिस्ट्री है. So we cannot run away from history. So let's love history and be happy with history. Happy history. Let's do some management studies. What it takes to produce a product. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? कोई प्रोडक्ट कैसे बनता है? Well, can you think of the factors? Various factors are needed, right? Like means of production, people, market, sales, etc. All these factors are important, right? अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो बनाने का जरिया हमारे पास होना चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? जो मशीनरी चाहिए, जो टूल्स चाहिए वो होने चाहिए, लोग चाहिए, वो सब चलाएगा कौन, मशीन्स है, टूल्स है, वो सब यूज कैसे होएगा. ओके, सो वी नीड पीपल, वी नीड मार्केट. प्रोडक्ट बन गया, बन क्या, कहाँ रखोगे उसको, मार्केट में रखना पड़ेगा, राइट? एंड सेल्स, वो प्रोडक्ट बिकना चाहिए, राइट? सो वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ थोड़े लिस्ट डाउन करे हैं. ओके, सो वेरियस processes, various things are involved to produce a product, right? Means of production, people, market, sales, etc. are involved in the chain of production. It's a common sense, yeah? Thus, knowledge of all these factors from the similar functional system of the past is useful and essential. यानी कोई भी सेम सिस्टम पास्ट में फंक्शन कर रही थी, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा था, वो उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था, उनके लोग कैसा काम करते थे, उनका मार्केट क्या था, सेल्स कैसा हुआ था, सारी चीज़ें जब आप समझते हो फ्रॉम द पास्ट सिस्टम, इट हेल्प्स यू टू वर्क इन द प्रेजेंट सिस्टम, राइट? आज जो आपकी प्रेजेंट सिस्टम है वो उसमें आपको पास्ट का नॉलेज काफ़ी यूजफुल होता है, राइट? अगर आपकी कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, या कोई आपकी फैमिली में है जिसने एमबीए किया रहेगा, तो आप उनको पूछ सकते हो कि जब वो कोर्स करते हैं तब उनको बहुत सारी केस स्टडीज होती है, जो रियल केस स्टडीज होती है कि ये कंपनी में इन सो एंड सो ईयर ये हुआ था, तो उसकी वजह से ये हुआ, तो आज ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम उससे हम सोल्यूशन ले सकते हैं, राइट? सो नॉलेज ऑफ द सेम फंक्शनल सिस्टम इन द पास्ट, ओके? Knowledge of all the factors from the same similar functional system of the past is useful and essential. वहाँ से हमको समझ में आता है कि आज हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए. जैसे कि वो ज़माने में उनको फैक्ट्री में कोई इश्यू हो गए थे, स्ट्राइक हो गई थी, तो किस तरह से उन्होंने वो स्ट्राइक के साथ डील किया. तो वहाँ से आज हम समझ सकते हैं क्या हम उस तरह से स्ट्राइक के साथ डील कर सकते हैं, या कोई और तरीका होना चाहिए. वो स्ट्राइक जिस तरह से वो डील करे उसका उनको सक्सेसफुल थे या फेलियर मिला. तो अगर वो फेल हुए तो आज वो चीज़ हम ट्राई नहीं करेंगे, हम कुछ और ट्राई करेंगे, राइट? सो दैट नॉलेज, सेम सिस्टम का जो नॉलेज है वो हमें आज भी हेल्पफुल होता है. अगेन वी टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, राइट? Well, we know humans are funny and weird, right? So it is better to understand them, their psychology for healthy management. हम इंसान काफ़ी फनी है, बहुत वियर्ड है, कभी भी हमारा मूड कुछ भी चेंज हो जाता है, राइट? तो इंसान जो ह्यूमन मैनेजमेंट है वो करने के लिए, बेटर ह्यूमन मैनेजमेंट के लिए हमें इंसान की साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है, राइट? हाउ वी थिंक. जैसे आप जो कंपनीज में काम करते, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ डील करने के लिए उनके एम्प्लॉयज़ किस तरह से सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, वो समझना ज़रूरी है. साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, okay, because ह्यूमन बींग्स आर नॉट सो ईजी टू डील विद, हाँ? सो
Understanding their psychology is very important for healthy management of people. It in turn requires understanding of the social and economic institutions. Okay, इंसान की साइकोलॉजी समझने के लिए जो सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, यानी किस सोसाइटी में हो रहे क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, ऑल दिस फैक्टर्स एज एन इम्पॉर्टेंट रोल. हम कहाँ रह रहे हैं, हम कैसे हालात में हैं, हमारी क्या सोसाइटी है, दैट इम्पैक्ट्स अवर साइकोलॉजी. सो साइकोलॉजी समझने के लिए जो सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है उसको समझना ज़रूरी है. And what are the social and economic institutions? What do? They support the industrial and commercial institutions, right? As we have seen, अभी हम लोग ने past में जब industry and commerce की बात कर रहे थे वहाँ पे हमने देखा कि how it impacts social and cultural life, right? So psychology of the people, वो psychology समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? उनकी social and economic institutions, वो जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रोथ में हेल्प करता है. ओके, दिस हिस्टोरिकल नॉलेज मेक्स मैनेजमेंट इजियर एट वेरियस लेवल्स. सो यहाँ पे हिस्टोरिकल नॉलेज, पास्ट का ये जो नॉलेज है वो समझ के हम करंट सिस्टम्स जो है, चाहे वो इंसान को मैनेज करना होवे या प्रोडक्शन को मैनेज करना होवे, जो भी अलग अलग एलिमेंट्स है उसका करस्पॉन्डिंग हिस्ट्री जान के हम आज के ज़माने में भी वो systems को manage कर सकते हैं. Here we are with the next subject, arts. Every artist and art has a style of expression, right? हर एक आर्टिस्ट का और हर एक आर्ट का अपना एक स्टाइल रहता है, right? ये तो हम सबको मालूम है. It's quite simple, it's logical, right? So this style of expression, वो जो एक्सप्रेशन का जो स्टाइल है, किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको बयां करते हैं, राइट? सो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर फाउंडेशन, वो जो फाउंडेशन कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आया है, राइट? एंड देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. कोई भी आर्ट है, इट इज बेस्ड इन समथिंग, राइट? इंटेलेक्चुअल, थॉट प्रोसेस, emotional. Art without emotion is empty. Okay, awawa, art without emotion is empty. So intellectual, emotional and cultural, right? हर एक culture का अपना एक art form रहता है. Okay, so style of expression, किस तरह से उसको express किया गया है, and their foundation किसके अंदर है? In the form of intellectual, emotional, cultural traditions. So these two aspects helps us to understand the development of various art forms. जो बहुत सारे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है, हमको मालूम है, राइट? फॉर एग्जांपल डांस में आप देख लो कितने सारे डांस के फॉर्म्स है, राइट? अगर हम ड्राइंग की बात करते हैं उसमें भी बहुत सारे फॉर्म्स है. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द आर्ट्स जो है, उसके अंदर कोई भी आर्ट में इतने सारे जो अलग अलग फॉर्म्स है, वो कहाँ से डेवलप हुए, किस तरह से ये डांस में ऐसा होता है, भरतनाट्यम में ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए, राइट? सो वेयर आर दिस थिंग्स कमिंग फ्रॉम? तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ है, जो अलग अलग आर्ट्स के जो तरीके हैं, जो फॉर्म्स है, वो कैसे बने, कहाँ से समझ में आता है? स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन से, एंड द फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, राइट? ओके, जैसे मैंने अभी बोला, इमोशंस के बगैर आर्ट एम्प्टी है, राइट? सो इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट है उसका इमोशनल स्टेट क्या है, ओके, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट एंड द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट. ओके, जो आर्टिस्ट है उसका जो इमोशनल स्टेट है वो, और कोई भी पर्टिकुलर आर्ट में वो जो भी आर्ट कर रहे हो तो रिस्पेक्टिव आर्ट, राइट? जो आर्टिस्ट है वो जो आर्ट में है, वो इसके लिए हम यहाँ पर रिस्पेक्टिव आर्ट बोल रहे हैं. तो वो आर्ट का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, तो वो आर्टिस्ट का इमोशनल टेम्परामेंट and the developmental history of the respective art form are the keys to the expressions in any form, and this can be understood with the help of cultural history. Clear है?
ठीक है। तो आर्टिस्ट का इमोशनल जो स्टेट है वो, और डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट, ये जो दो चीजें हैं आर द कीज टू द एक्सप्रेशंस इन एनी आर्ट। जो एक्सप्रेशन है, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कहाँ से आता है? जो डेवलपमेंट हुआ वो आर्ट में, पर्टिकुलर आर्ट, जिस आर्टिस्ट की हम बात करते हैं, वो जो आर्ट कर रहा है वो, और उसका इमोशनल टेम्परामेंट है, वो डिफाइन करता है कि वो एक्सप्रेशंस किस तरह से होगा, राइट? सो आर द कीज टू द एक्सप्रेशंस इन एनी फॉर्म। एंड ये समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? कल्चरल हिस्ट्री। Okay, so I will just repeat this once, and if you want, you can repeat with me. Emotional temperament of the artist and the developmental history of the respective art form are the keys to the expressions in any art form, and this can be understood with the help of cultural history. Okay, emotions समझो and art field keeps developing. Final on the list is humanities. It is very, very vast as it includes history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economics, etc. etc. बस करो यार, बच्चे की जान लोगे क्या? इतना सारा है ह्यूमैनिटीज के अंदर। हिस्ट्री पे है, आर्कियोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। अरे मेरी भी सांस फूल गई इतने सारे नाम लेके। वेल, ऑल दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज। ओके, सो कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा? आई मीन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज डिसिप्लिन्स की अंडरस्टैंडिंग भी नेसेसरी है। सो ऑल दिस डिसिप्लिन्स दैट वी सेड, ये सब लाइक हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, आर्कियोलॉजी है, जो भी है, ये सारे जो फील्ड्स है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो आगे कैसे बढ़ा। सो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस डिसिप्लिन्स इज अंडरस्टैंडिंग, आई मीन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस डिसिप्लिन्स की अंडरस्टैंडिंग भी नेसेसरी है। Okay, all these disciplines are supposed to have their origin in philosophy. ये सारी disciplines जो है उनका origin कहाँ पे है? Philosophy में. Okay, so let's understand bit better. Ancient people, जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, all over the world. Okay, we are not just talking about India. We are talking generally all over the world. पूरी दुनिया के लोगों की हम बात कर रहे हैं. So what did they try? They tried to speculate. उन्होंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, उन्होंने समझने की कोशिश की. They tried to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. उन्होंने क्या अंदाज़ा किया, उन लोग क्या समझना चाहते थे कि जो यूनिवर्स है, जो दुनिया है, वो दुनिया और हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर क्या रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हम हैं इस दुनिया में और ये दुनिया है, तो हम और दुनिया के बीच में, इंसान और दुनिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो समझने के लिए उन्होंने स्पेकुलेशन शुरू किया। ओके, दे हैव नो थियरी टू बेस ऑन, दे आर जस्ट स्पेकुलेटिंग। उन लोग अंदाजा लगा रहे हैं। ओके, उन लोग अपनी सोच लगा रहे हैं। देयर इज नो एविडेंस, नो थियरी, दे आर जस्ट स्पेकुलेटिंग। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से बहुत सारी mythological stories डेवलप हुई। The speculation led to the development of various mythological stories about the origin of this world. दुनिया इस तरह से शुरू रहेंगी, the universe में ये है, human life ये है, God ये है, ये rituals है, right? So it gave rise to many mythological stories. The speculation by the ancient people, जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, जब उन्होंने अंदाज़ा लगाने चाहा, जब उन्होंने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि इंसान और इस दुनिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, so they started speculating, right? No basis for any of the theories, they're just speculating, जिसकी वजह से आज क्या है हमारे पास? बहुत बहुत सारी mythological stories है, right?
कोई बोलता है दुनिया इस तरह से शुरू हुई, कोई बोलता है दुनिया उस तरह से शुरू हुई. सो दुनिया कैसे शुरू हुई, गॉड क्या है, ह्यूमन लाइफ क्या है. सो वी हैव मेनी स्टोरीज अराउंड दैट. Also, the roots of the philosophical ponderings are to be found in this mythological stories. ये जो stories है उसके अंदर फिर those stories give rise to many thinking, right? Okay, अभी लोगों ने speculate किया, but now people also wants to develop some philosophy around it. तो आज जो काफ़ी philosophical ponderings है, जो philosophical ideologies है, उसका root कहाँ पे है? So they are into this mythological stories. Okay, आज for example एक फिलोसफी बोलता है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. सो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? समवेयर फ्रॉम दिस मिथोलॉजिकल स्टोरीज. या जो लोग कुछ मानते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, सो ये जो फिलोसफी है उसका ओरिजिन कहाँ से आया? सो सम ऑफ दिस फिलोसफीज, आई एम नॉट सेइंग ऑल, ओके, मेनी ऑफ दिस फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स का जो रूट है, इट कम्स फ्रॉम दिस मिथोलॉजिकल स्टोरीज. ऑल्सो ये जो अलग अलग डिसिप्लिन्स हमने बोला ह्यूमैनिटीज़ के अंदर है, राइट, जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो भी है, ये अलग अलग जो डिसिप्लिन्स है, दे हैव द थियोरेटिकल फाउंडेशंस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थियोरेटिकल फाउंडेशंस, ओके. सो दे हैव द थियोरेटिकल फाउंडेशंस based on this philosophical theories. Okay, so do you see how all these things are connected, right? So ancient people speculated, which gave rise to mythological stories, और mythological stories में से philosophical ponderings आए, and वहाँ से theoretical foundations भी आए. Okay, so all these things are in that way connected. So only historical knowledge can help us in understanding this developmental stages. तो कहाँ से क्या हुआ, कौन सा पहले स्पेकुलेशन हुआ, उसके बाद उसमें से क्या मिथोलॉजिकल स्टोरी आई, उसमें से क्या फिलोसॉफिकल पॉन्डिंग्स हुई, वहाँ से क्या थियोरेटिकल फाउंडेशन मिला, राइट. सो ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज जो है, इसकी हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तब आपको ये सारा कनेक्शन, एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है, एक दूसरे ने हाउ इट गिव राइज टू अनदर थिंग, चेन ऑफ इवेंट्स जो है यहाँ पे, वो हम समझ सकते हैं. ओके, so here we are, done with the whole chapter. Wasn't that easy? Do you say that happy history now? Yes, it's very simple. I'll come with more videos for all the chapters. Do keep watching them. Keep watching them again and again, ताकि आपको वो याद रह जाए. बराबर से एक बार देख के छोड़ नहीं देना है, बार बार रिपीट करना है. आपको बीच में ब्रेक लेना है तो ब्रेक लीजिए, मेरे से बार बार देखिए, क्योंकि इसमें आपके पास पिक्चर्स है, आपके पास वॉइस है, तो आपको इजीली ये सब चीज़ें याद रह जाएगी. ओके, सो कीप वॉचिंग एंड आई विश that you score really well in your exams. Thank you very much. Do remember to subscribe so that you get notification when you upload new videos, right? Do remember to like, share and comment as well, so that your friends also can know about it.